कर्नाटक काबीना में 19 नए उज़रा की शमूलियत के बाद कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमाओं ने काबीना में शामिल न करने पर खुलकर नाराजगी का इजहार किया है। कई रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत के फैसले पर सवाल उठाया कि उनकी तवील खिदमत और वफादारी को नज़रअंदाज किया गया है। गांधीनगर से कांग्रेस के एमएलए दिनेश गुंडूराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत और पार्टी की कई दहाइयों की खिदमत के बावजूद उन्हें काबीना में शामिल नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि उन्हें किस बुनियाद पर नज़रअंदाज किया गया। साबिक वज़ीर और नरसिम्हा राजा असेंबली हल्के के एमएलए तनवीर सेठ ने भी काबीना में जगह न मिलने पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की है। मैसूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि काबीना किस बुनियाद पर तश्कील दी गई है। तनवीर सेठ ने इल्ज़ाम लगाया कि जिन लोगों ने खुलेआम पार्टी की मुखालिफत की या जिन्होंने सीनियर रहनुमाओं के नाम इस्तेमाल करके हिमायत हासिल की, उन्हें इनाम दिया गया है, जबकि बरसों से वफादारी के साथ पार्टी की खिदमत करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने कई मरतबा उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि उनकी सीनियरिटी, वफादारी और खिदमत को देखते हुए उन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें धोखा हुआ है। अगरचे तनवीर सेठ ने कहा कि वो पार्टी के एक नज़्म व ज़ब्त के पाबंद कारकुन के तौर पर काम जारी रखेंगे, ताहम उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो मुनासिब वक्त पर उन रियासती रहनुमाओं के नाम अवाम के सामने लाएंगे जिन्होंने पसे पर्दा साजिश करके उन्हें काबीना में जगह मिलने से रोका है। उधर बंगारपेट से 3 मरतबा के कांग्रेस एमएलए एएस नारायण स्वामी ने भी नाराज़गी का इजहार करते हुए काबीना में शामिल न किए जाने का जिम्मेदार वज़ीर खुराक और शहरी रसद केएच मुनियप्पा और उनकी बेटी केजीएफ की एमएलए रूपा काला है। नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने कोलार और चिकबालापुर के दोनों अजला को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि पार्टी ने इन इलाकों से असेंबली की 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। दलित बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण स्वामी ने कहा कि कोलार और चिकबालापुर के तमाम कांग्रेस अरकान असेंबली जल्द मुलाकात करेंगे ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और आइंदा की हिकमत अमली तय की जा सके। इन तमाम अरकान असेंबली ने साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया पर भरपूर एतमाद किया था, लेकिन इस एतमाद का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला और उनके इलाके को काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಯುವಕ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಇರೋದು 140 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. 140 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು 34 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ. ನಾನು 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆನ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆನ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪುನಃ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳು ಮಗು. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್,
demand is very simple. We have to give a good government with an eminent minister. So today the ministry has been announced, the cabinet has been announced, but somewhere our MLA Shri Dinesh Gundarau's name was not there. So we are feeling very bad because he has proven him what he is. Because he was a 2 times minister, one is a food minister and other is a health minister, and 2 times also he has proved what he is. So there is no doubt, there is no corruption, there is no any allegation against him. Then too, he has got the seniority also because he has won 6 times without any religious support. Universally he has been selected by the people of Gandhinagar. So there is no negative about Dinesh Gundarau, but then too his name was not there. So we felt very bad. So we have come to the Congress office, we have protested in a peaceful manner, and we have given our memorandum to Mr. KPCC President, Mr. B.K. Hariprasad ji. He has assured that definitely he will send this memorandum to the Delhi High Command and he will give a good result within tonight. Furthermore is nothing. See, this is what we have, because this is our right. It is not nothing against the party or against the leadership. It is our right. We have asked our right. It is up to the party to decide. Definitely we are expecting a good result from the party high command.